Good evening, namaste. Welcome, dear friends, to today's class on Patanjali's Yoga Sutras. Let us begin our class with a prayer. But before we pray, let us first come to this moment, drop away all thoughts, integrate all our feelings, be centered in ourselves, be centered in the heart, and with the next breath, bring up the energy to the spiritual eye, gaze upwards. Make sure the spine is straight. With the next inhalation, raise your energy from the lower chakras, through the heart, up to the spiritual eye. And exhale through the spiritual eye. Once more. Inhale, long deep breath, bringing up the energy, centering it, focusing it at the spiritual eye. And then exhale out from the spiritual eye. Fix your gaze there. Know that the Lord is ever present and available if we focus enough at the spiritual eye. Let us pray together. Heavenly Father, Divine Mother, Friend, Beloved God, Bhagwan Krishna, Jesus Christ, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar Ji, Beloved Gurudev Paramhansa Yogananda Ji, saints and sages of all religions, great sages Ved Vyas, Patanjali, Adi Shankaracharya, we humbly bow and touch thy feet. Dear beloved Lord, give us the wisdom so that we may conquer pride with humility, wrath with love, excitement by calmness, selfishness by unselfishness, evil by good, ignorance by knowledge, and restlessness by the ineffable peace acquired in the stillness of inner silence of meditation. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let us invoke the presence of the Gurus by singing the hymn to Brahma.
May we be able to remember the Lord at all times. When we breathe, it should remind us of the energy of God flowing through us. When we think, we should remember that the very thought process is an ability that has been given to us by God. When we interact with others, we should remember the gift of love and kindness that God has given us, that we may relate to this world and be entertained and educated in this world. All that we are has been given to us by the Lord. May we live in the gratitude and true remembrance of Him at all times. Let us hear a few words on peace of mind. Peace of mind is the result not of money in the bank, but of prayer and meditation. The more one contacts God in meditation, the more he feels descending upon him a blanket, as it were, of inner peace, cooling his body, calming his restless impulses, and thrilling his nerves with ever new delight. Peace is like a weightless waterfall, washing away all worries and bestowing a new, glad sense of confidence. Peace of mind is his who knows that God is his only treasury. Let us do the following affirmation. From pools of inner silence, I sip the sparkling waters of thy peace. From pools of inner silence, I sip the sparkling waters of thy peace. From pools of inner silence, I sip the sparkling waters of thy peace. Mentally follow this affirmation and prayer. All that I own is thine, Lord. Help me to know thee as the river of peace, running silently beneath the sands of all my life's experiences. Om Shanti, Shanti, Shanti. Good evening and welcome again, dear friends. We are studying the Yoga Sutras organized by Patanjali, and we are going to start with Sutra 30. We did half of Sutra 30 last time. And just as a little revision of the previous few sutras so that we feel a continuity, in the last class we discussed that how Patanjali has described God as the supreme being who is beyond all kleshas, the being who is beyond afflictions, karma, the fruit of action, and who is omniscient. That means the seed of omniscience is ever present in him. And he is the teacher of all teachers. Then in the next sutras, Patanjali went on to say that the sound of Om is the manifestation of God. So Om represents God himself. And then he says that meditating on Om can take you to the ultimate state of samadhi, and how being in Om, living in Om, can actually remove all the obstacles that confront a yogi on his spiritual quest towards truth. And then the Sutra 30, which we're going to do, it actually labels all the obstacles that are there in the yogi's path, and we discussed a few. Just to revise, all the obstacles, naming them, they are desire, dullness, doubt, carelessness, laziness, sensuality, false perception, missing the point, instability, and backsliding. Out of these, we've already discussed disease, dullness, doubt, carelessness, and laziness. And today we will start by understanding sensuality.
So we must remember here that sensuality is not just sexuality, although it's on a grosser level, it does represent so, but actually sensuality is misusing or overindulgence in any of the sense faculties, including taste, smell, and hearing and vision and all of that. Okay, and when Yogananda ji talked of sensuality, he said it is one of the three major delusions as is known. One is wealth, one is sexuality, and the third is inebriance like alcohol or drugs or addictions of those sorts. So Swamiji says sensuality is an insult to your soul. To believe that you need some sensation or some sense of touch, let's say, if we talk of sexuality, to be happy, that's a very big limitation that you are putting on yourself. You should remember that you are not at all this body. So and he goes on to say that sexuality, especially overindulgence in sexuality, is going to debilitate you mentally and physically. And Swamiji said, look all around you and you will find that how restless people are because of their overindulgence in all these sense pleasures, especially sexuality. All their nerves burn out, they age faster, their minds are scattered, they have no control over themselves, and so on. So he says that it will rob you of your finer sensitivity. It's how, what do we mean by finer sensitivity? So when we are let's talk about music. When we are relatively younger and rock music kind of it appeals to us, we listen to rock music, and if somebody tells us, oh, why don't you listen to a raga, we are not so attracted towards the raga because our taste is not so refined as yet. Similarly, sexuality is a gross sensation, and people who indulge in that are unable to actually understand and experience finer ways of feeling happiness in their heart, or peace of mind, or calmness, or wisdom. They do not have those finer refinements in themselves to appreciate these things. So it robs you from finer things, and it keeps you engrossed in materiality, in gross pleasures of this world. Okay, the way to overcome sensuality is to affirm your freedom from the body. So the wisdom, you keep telling yourself that you are not the body. You have to affirm this. You have to know it through wisdom that you are not the body. Through meditation, you have to realize your expanded self to know that you are not the body. If you keep coming back to this, that you are not the body, eventually the pleasures of the body are not going to be so appealing to you, because you've tasted the finer pleasures of the soul pleasures, you can say, the divine bliss you have experienced. Now, Swamiji says, but even if you kind of fall back into your habit, never say that I have failed. You may say, I have not succeeded yet, but you have to keep trying. And in his Raja Yoga course, which most of us are familiar with, he has given pranayam techniques, and he has suggested diet, that if one is actually going through a problem of over-sexuality, what all is it? There are practical ways to transmute that energy towards finer refinements. Okay. Then we come to the next obstacle, which is false perception. Now, this false perception happens all the time and we do not realize it. So Swamiji explains it with the help of an example. He says that, a person is meditating regularly and he's going deep in his sadhana, and then somebody from the external world will tell him, तो इतना क्यों meditate कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है, and all that. तो ऐसे आप you think you are meditating and you're doing right and you are ignoring your duties. So in a sarcastic way, people will tell you you're ignoring your duties, and that you should not be doing meditation, you should be doing otherworldly duties. So but we should remember, is it not our highest duty to seek God? Is it not the highest duty for us to realize who we really are? And is it not our highest duty to be in touch with that peace that we are? And only when we perform this highest duty, only when we become at peace with ourselves, or we become peace itself, only when we become love and joy itself, can we actually do all the other duties given to us by the Lord
in perfect peace, in perfect calmness, in more efficiently and in perfection than we would be able to do if we would not meditate. So I'm sure all of us have been meditating for some time, and I would like to ask you, how was your daily life before you started to meditate, and how is your daily life after you've been meditating for some time? So anybody who wants to share their experience of daily life before and after meditation, please do so. Guru. Guru. Yeah, this is very interesting, this thing. And yeah, before the I got involved in meditation and all that, the things were restless, the mind was not calm. And whatever the divine energy, whatever energy we have is divine energy. So it's our duty to use it for divine purpose. So most of the energy was being used for the worldly pleasures and time pass, and there was no direction. The things were moving, and that's why the calmness and restlessness was there. So now, after coming on this path and listening and going, reading so many things and experiencing so many things, the fact is, whatever energy we have, divine energy we use it for divine purpose, the more peaceful we are. The moment we use it for, as you're talking about sensuality, that other than procreation, that becomes a selfish purpose, self pleasure. So that leads to that energy is being wasted, you using it for your selfish purpose. So that then that becomes a suffering. So the very thin line difference, we need to understand this uh, balance which we are not able to maintain. So that is what I'm practicing now. So I think that is helping. Thanks. Thank you. Thank you so much. Anybody else wants to share how their daily life has changed? You're doing probably the same chores Yes, that ma'am. you're doing. Yes, yes, Ekta. Yes. So basically, rather than giving my experience, I would like to share the experience of my husband, who is, living with me. And what he said few days back is like, Ekta, जब से आप Canada आए हो ना, you have changed 360 degree. आप तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हो. बट ही डजंट नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द Canada, it's because कि Canada आने से 5 दिन पहले ही मेरे को क्रिया मिली थी, and I am into the meditation process, and it's all because of that my way of working and everything has changed a lot. Yeah. So that's good. That's good. It's great when people observe these things in you, you know that God is working through you, and you feel all the more confident. And you just, there's, that inner gratitude towards the Guru that, thank you, Guruji, for doing all this through me. So basically, we are being used as instruments for God's light, coming into the world, into the family, into our little units where we work and so on. So yes, that's great. Thank you, Ekta. Yes, Pandiji. After 2-3 years of doing meditation, I found a big transformation in the life. More positivity started coming, more relaxation started coming, detachment started coming. So over last 8-10 years, lot of detachment has come. Self-requirement started going down and down. The difference between likes and dislikes narrowed down. So I find a big change in last 12-13 years on this path. So basically, Master has changed our whole life. He's taught us how to sit, how to stand, how to work, how to speak, how to do everything, how to eat, what to eat, how to work, how to be a good employee, how to be a good employer, how to do everything. Everything he has taught us, how to breathe, how to love. So it's amazing, and all of us here have experienced to different degrees Master's love and the joy of being a yogi, actually. And then this also takes us away from false perception. So today, if anybody
tells us that, you know, we should not be meditating, we would not listen to that person, isn't it? Because Master has brought us from that false perception that worldly people have towards the light of truth. Yes. Alka, you also want to say something? मल्टीपल चेंजेस है, बट एक क्विक है. पहले ना मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह बड़ा सुनती थी, मतलब मन ही नहीं होता, सिर्फ भजन या कोई वर्कआउट भी करना है ना तो लगता है हनुमान चालीसा लगा लेती हूँ. पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा चेंज है. Yes, so here is the refinement that, you know, Swamiji has talked about. You naturally like to hear and to do Godward things. This is a part of that key turns in us that, you know, or in all our actions also we want to practice the presence of God. This is purely Guru's grace. Otherwise, and sometimes, you know, I have heard, I liked old Hindi songs because they were rag based and they had beautiful lyrics and all. And it's very interesting that those songs, some even romantic songs, can be sung to God. So even that shift comes, even if you're hearing an old song and it's a love song, but somehow, you know, it's you love it for the cosmic beloved. So yes, a lot of changes come. Thank you for sharing. It was a good point, Alka. Okay, so another false perception. Now here Swamiji warns. He says, please introspect with yourself. Are you shirking your valid responsibility? तो क्या मेडिटेशन के नाम पे आप एक्चुअली अपनी जो पूरी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रियल ड्यूटी गिवन बाय गॉड है, उसको शक कर तो नहीं कर रहे हो? मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि और भी ऐसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो और आप कहो कि जी मैं तो अपनी कुर्सी पे बैठूंगा नहीं क्योंकि मुझे मेडिटेशन चेयर पे ही बैठे रहना है, तो आप शर्त नहीं कर सकते. जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने मेडिटेट ही 8 घंटे करना है. आपको इन दैट केस स्वामी जी सेज यू शुड वर्क मोर एंड मेडिटेट लेस. So be very careful. There is a fine line, and all present here are responsible enough to know that fine line and know how important is meditation, but it is also important to fulfill our duties in the name of God. Then another false perception is that, you know, suppose one person is very harsh in his speech, is irritable, gets angry all the time. He's just, you know, blatantly speaking out the truth. So he will justify oneself, you know, by saying कि क्या मुझे सच नहीं बोलना चाहिए? But इससे भी higher truth है. जब हम speech की बात करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि is it not higher truth to be loving and to be kind? Yes. तो अगर सच है भी पर ना वो beneficial है और ना वो pleasant है, तो फिर उसको utter करने का फायदा क्या है? In that case, we should hold ourselves back. Then silence is better than speech. So these are false perceptions that people live in, and we all live in. हम जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ छोटा मोटा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर किसी का फायदा हो तो कुछ होता है. ऐसा मैंने कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा है, बट लोगों की ये फॉल्स परसेप्शन है, वो उसमें जीते हैं थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा, depending on their own, you know, kind of understanding of the truth. But ये सारी false perception है जो सुबह से शाम कई हमारे मन में घर कर चुकी हैं, हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी हैं, कुछ बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेंड्स बन चुकी हैं. जैसे कईयों के मन में फैमिली रिचुअल्स जो होते हैं या वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि जब मेडिटेशन से वो लूजन अप होने लगते हैं तो उनको गिल्ट फील होता है कि मेरा आउटर रिचुअल छूट रहा है, जबकि हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिवोशन है ये इवेंचुअली आउटवर्ड से इनर जानी है, बट क्योंकि ये हमारे अंदर इतने इनग्रेन हो चुके हैं तो वो हैबिट्स से निकलने में समय लगता है. बट as a yogi, we should, in an unbiased way, we should analyze our own thoughts and also check which thoughts are serving us, means serving us in the sense they are taking us in the direction of God's freedom or they are binding us to materiality. अगर रिचुअल आपको सिर्फ बांध के रख रहा है और आपको अंदर से नैरोनेस का एहसास दिला रहा है, फ्रीडम नहीं दिला रहा, एक्सपेंशन नहीं दिला रहा, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन है. ये एक योगी को अपने आप समझना चाहिए. और फॉल्स परसेप्शन का सबसे इजी पैरामीटर जानने का यही होता है कि क्या वो एक्सपेंशन और फ्रीडम दे रहा है कि नहीं दे रहा है. अगर कोई थॉट या कोई स्पीच या कोई एक्शन या आपकी थिंकिंग आपको नैरोनेस की तरफ लेके जा रही है और आपको मींस इट्स काइंड ऑफ जस्ट क्लोजिंग यू इन, you feel bound by it कि ये तो करना पड़ेगा काइंड ऑफ थिंग,
तो फिर you have to realize, you have to step back, see at it in an unbiased way and introspect and then change it towards the right perception. कई बार इतनी subtle होती है कि हम खुद नहीं कर सकते हैं. कभी भी कोई भी decision लेते टाइम मन में अगर restlessness आए, know that there is something wrong with that. So at that very moment, offer it to Guruji. Say that I am confused, I may not know, I'm not very sure if this is the right or the wrong thing, please guide me. So जब तक common sense से समझ आ रहा है, Guruji is there in the common sense also. Keep doing what you think is right, but at any moment you feel जहाँ पे हल्का सा भी लगे problem आ रहा है, उसी समय pause and offer that question to the Guru, and he will help you to understand the higher level of it. Okay, so then comes the obstacle of missing the point. तो अब इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, would we want to miss the point? What is the point of life? Okay, so this is another next question for everybody. What is the point of our life? What are we doing here? Anybody wants to answer that question? हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर को प्राप्त करने आए हैं. क्यों प्राप्त करने आए हैं? उससे क्या होगा? क्योंकि यही हमारी रियलिटी है और हम जितनी जल्दी बात को समझ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है. That's right. So हम ईश्वर को प्राप्त करने आए हैं क्योंकि हम ही ईश्वर का हिस्सा हैं और हम यही realize करने आए. You know, it's like a game. We are the infinite. We have descended into that game. We are playing a role, but as we play that role, we must try and understand who we really are. So that's the game all about. You descend and you have to go back. And God loves to play this game with with all his children. वो सबको narrow delusion में डालते हैं और फिर then he sees, you know, how children come back and free themselves. So yes, anybody thinks anything else कि हम कुछ और करने आए हैं और क्या क्या करने आए हैं हम? Yeah, not only that, we have to you know, increase our light. Secondly, what more important is divine energy flows through us to help others also, as you are doing for us. You know, your divine energy is flowing through you and you're sharing the light with us, so we are also getting enlightened. So this is the first selfless purpose which we are supposed to be doing. First, lighten up yourself and help others so that they can also go home with us. That's what how I understand. Okay, so but yes, the first purpose still remains the same. The first purpose is self-realization, is realization of the truth of who we are, and only once our bulb is lighted, that, you know, that light can shine. And I've seen master has told us so many times, emphasizing in so many different ways that we should help others to get back home. This is how I perceive this. That's right. In fact, Master has given a number to this. He says that you have to help to free at least 6 other people before you will actually be set free. So you mean 6 Kriyabans? That he hasn't said. You have to help to free 6 other souls from their delusion, and then you are set free. So, and there's this story of a great yogi who was great in his yoga practice, and he was in a state of samadhi. But then after years of his samadhi practice, his samadhi was broken in some way or the other by God's will, because God wanted him to actually help others as well. So the first goal still remains the same. It's only after we reach the first goal that we have even the ability to think that we should be able to help others, or we should be helping others. And helping others, sometimes there are yogis in the Himalayas sitting inside the cave and still helping people. How are they helping? Because they have brought the light within themselves. And it is said that one meditating yogi can counter the effect of 1,000 worldly people. So it's not necessary that everybody is going to be involved in an outer task. It is going to be each soul's own journey. It's guidance by the master and by God. So, but yes, automatically, if you are self-realized, if you're a yogi, jnana yogi yourself, then automatically people who are around you, or in general, the vibrations that you kind of send into the world, are healing and uplifting for the entire society. It is said that the day Buddha attained enlightenment, so many changes came over the fields, over the animals, over people. So the entire earth energy changes when even one soul is, it's
it attains complete enlightenment. So yes, we need to work with ourselves, but इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेट करेंगे कि पहले हमें पूरे निर्विकल्प समाधि आ जाए, हम तभी औरों की मदद करना शुरू करेंगे. It's like we hold hands, we go as co-passengers, and we have the joy of each other's company also, because traveling alone is no easy task. It's not for everybody. Not everybody can be alone. आप अपने आप को घर में बंद करके देखिए, 2-4 दिन बिल्कुल अकेले, किसी से बात ना करिए, कितनी देर धीरे धीरे मेडिटेशन भी फिस आउट हो जाएगी. So you need that, you know, that social interaction. God has made this life like this. So yes, we work for ourselves, our higher self, which includes everybody else also. Okay, so we don't want to miss this point of self-realization. Swamiji says, missing the point means allowing problems of the moment to make one forget that why he embarked on the spiritual path in the first place. So ये बहुत commonly देखा गया है. जब suppose एक problem आई life में जिसने आपको बहुत ही परेशान कर दिया, तो इसलिए आप उस समय meditation की तरफ आप turn कर गए. आप meditation सीखा, आपने meditation किया, 2-4 सालों में जो है वो problem आपकी solve हो गई या थोड़ी बहुत कम हो गई और आपकी life में एक relative peace आ गया. So आप उसी पीस से आप satisfy हो जाते हो और आप आगे अपनी practices छोड़ देते हो या window shopping करने लगते हो इधर उधर. So in that case, what happens is you miss the point. If you keep changing your trains, or if you just settled by moving, let's say 100 steps out of 1,000, then you have missed the point. So we must remember always that yes, we are looking for peace and happiness, but we are not looking for temporary peace and happiness. We are looking for that peace and that bliss that will never fizz out. It's going to be, it has to be ever new joy. So कभी भी आपको लगे कि अब मैं practice थोड़ी कम करता हूँ because मैं बहुत comfortable हूँ, अब मेरी life में सब कुछ ठीक चल रहा है, beware, it's a warning. You have to keep working in some direction. According to the Gita, if you're not moving upwards, you are sliding backwards. So be very, very careful and do not allow, this is a delusional thought, ये माया की thought है जो आपको कहती है कि अब ठीक तो है, अब क्या जरूरत है. So don't fall into that trap. Do not rest until you know that you are one with God, with conviction, with every fiber of your being, which is self-realization, that every fiber of your being, you know that you are one with the infinite. Till that stage comes, we should not stop. We should keep on going in that direction. Yes, of course, the speed may sometimes alter, the life brings certain challenges, but अगर दिशा आपने निर्धारित कर दी है, तो उस दिशा को ना छोड़ें. Speed थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो life में होता ही है. Don't worry about that. Okay. So then we come to instability. Instability is a threat to the equanimity that everyone should develop on the spiritual path. To be even-minded and cheerful is the first duty of a yogi. These are words by Paramahansa Yogananda. We should remember. So अब अपने पे check करते हैं, क्या हम even-minded और cheerful रह पाते हैं या नहीं रह पाते. हम हर पर्सन को अपने में इंट्रोस्पेक्ट करना है रोज रात को कि क्या आज मैं इरिटेबल हुआ, क्या मैं एंग्शियस हुआ, क्या मेरे में फियर आया, मैंने वरी करी, या मैंने दूसरों को जोर से बोला, या हार्शनेस आई, मींस वाज आई अनकाइंड, वाज आई कंपैशनेट और नॉट, वाज आई ट्रूथफुल और नॉट. ये सारी चीजें जो हैं ये हमें खुद ही अपने आप में एनालाइज करनी है और उसको धीरे धीरे करेक्ट करना है. बिकॉज जब तक हम इवन माइंडेडनेस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हम डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में कैसे जाएंगे. अगर हम प्लेजर में एक्साइटी होते रहेंगे तो पेन में हमें रोना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है. सक्सेस में बहुत उछलेंगे तो फेलियर में फिर रोएंगे ही. ये एक बिहेवियर दूसरे से काउंटर इक्वल होगा ही मैथमेटिकली. तो तरीका क्या है? द वे आउट ऑफ डुअलिटी इज द इजीएस्ट वे इज टू प्रैक्टिस इवन माइंडेडनेस एंड चीयरफुलनेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे बाहर दुनिया इधर से उधर हो जाए, मास्टर्स में यू स्टे काम, यू बी सेंटर्ड इन योरसेल्फ, यू बी इवन माइंडेड. दिस इज ऑल अ गेम. रिमाइंड योरसेल्फ, जब एक्साइटमेंट आए या पेन आए, रिमाइंड योरसेल्फ दिस इज ओनली अ शो, दिस इज ओनली अ ड्रीम, दिस इज गोइंग टू पास. If I get excited, I will get trapped in the dream. If I get sad, I will get trapped in the dream. So you have to be very alert कि क्या आपका मूडी बिहेवियर हो रहा है, आप सैडनेस में जा रहे हो, मेलैंकली में जा रहे हो, या ओवर एक्साइट हो रहे हो. और कई बार हम बाहर से उछल नहीं रहे होते लेकिन दिल में एक रेस्टलेसनेस होती है, तो वॉच आउट इवन फॉर दैट.
And at that very moment, you feel that your heart is restless, do a deep breathing exercise, offer that restlessness to God, start chanting, start doing japa. There are so many tools that we can use. We can do Hongsa, we can do Kriya, and so many other things. So just important thing is being alert that now you are not feeling as stable. You are not steady in your heart. You are not feeling even-minded. And then from there, with all the tools available, choose the right tool and then bring yourself back to your own center. It is a good practice for the devotee to develop even-mindedness. Imagine the worst calamity that could befall you and mentally accept it with a smile. So कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, उसमें स्वामी जी कहते हैं कि सोच लो कि वर्स्ट हो गया और सोच लो कि वो भी एक्सेप्ट हो गया, आपको, you have accepted it, and then what after that? After that there is no place of fear, there is no expectation कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. आप ऑलरेडी बॉटम पॉइंट पे पहुंच चुके हो, वहां से आप केवल ऊपर ही आ सकते हो. तो मेंटली कोई भी जब सिचुएशंस का आपको डर लग रहा हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आप सोचिए हो गया, सबसे जो बेकार हो सकता था वो भी हो गया. तभी भी आप ये पाएंगे, क्योंकि हमने गीता पढ़ी है, हमने मास्टर की टीचिंग्स फॉलो करी है, वह सिचुएशंस में भी हम पाएंगे कि जो अंडर करंट ऑफ पीस है और जो हमारा चेंजलेसनेस है, हमारे हार्ट में चेंजलेसनेस छुपी हुई है अंडर ऑल दैट चेंज व्हिच वी डू टच इन मेडिटेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम वी टच इन मेडिटेशन, दैट इज स्टिल देयर. हम नहीं बदले हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस बदल गई हैं. और जब डिफिकल्ट टाइम आता है, वो ज्यादा अच्छा टाइम होता है ये रियलाइज करने के लिए, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट दिस पर्सनैलिटी, we are only playing this role temporarily. You remind that to yourself all the time. It helps us to withdraw and kind of become non-attached to whatever situation. दुख वाली situation है, उससे भी आप withdraw कर सकते हो. सुख वाली है, सुख मतलब जो worldly pleasure वाली है, उससे भी withdraw कर सकते हो आप consciously, और even mindedness की तरफ आ सकते हो. Then again, oppositely, Swamiji says, imagine the greatest good fortune that has attended you. मतलब जो आपने ड्रीम किया था वो पूरा हो गया. आप अभी भी सोचिए कि मेरे को ये चाहिए था और आप सोचिए कि वो हो गया, तभी भी क्या? Then what? Suppose you attain all the desires of what you have of this world, and then what? Then also you have to bring yourself to your own center. इस duality के खेल में आपको अपने आप को सेंटर करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक वेव ऊपर ले जाएगी, अगली नीचे, फिर ऊपर नीचे. अगर तो आपको ये गेम खेलने में मजा आ रहा है, ऊपर नीचे जाने में, तो जाते रहिए, कोई आपको रोक नहीं रहा. You have millions of lives to do this. But if you're fed up with this game of up and down, up and down, up and down, then you have to pause. Then you have to be still. Then you have to be in your center. Then you have to practice even-mindedness, even when the outer circumstances are changing you and challenging you. Okay. Then comes backsliding. Backsliding happens when people's devotion diminishes. ऐसा होता है बहुत बारी. जब हमारी कोई बहुत अर्जेंट नीड होती है, तो हम भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं कि ये चाहिए, ये, या इससे बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो, बीमारी से बचा लो, हमें ठीक कर दो, एंड सो ऑन. लेकिन जब वो फुलफिल कर देते हैं भगवान, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि भगवान थे और उन्होंने दैट द लाइफ दैट वी आर लिविंग इज बिकॉज ऑफ हिम. ये तो हम भूल ही जाते हैं, उनको तो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है. तो ऐसा होता है कि ये डिवोशन जो है बीच में फेजेस में आते हैं जब डिमिनिश कर जाती है. वॉच आउट, द योगी विल वॉच आउट. सो डिमिनिश करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब डिवोशन की एनर्जी सीधा हार्ट चक्र में होती है और हार्ट से हमने ऊपर जाना है. डिवोशन डिमिनिश होने का मतलब क्लियरली एनर्जी लेवल से ये है कि आप लोअर चक्रस की तरफ जा रहे हो. लोअर चक्रस की तरफ जा रहे हो तो आपकी अटैचमेंट, फिर से जो चीजें आप छोड़ के आ चुके हो, फिर से आप उन्हीं तरफ जाने लगोगे और वो चीजें आपको ऑलरेडी पेन दे चुकी हैं. सो द योगी इज अवेयर, शुड बी अवेयर that his energy is dropping, and therefore he should do all that it takes. So sometimes some devotees, they tell me that meditation nahi ho raha, bahut din ho gaye hain, अच्छे से नहीं हो रहा है, and all that. So then sometimes you have to tell them to do something outward first and then they come back to. So sometimes you have to tell them to do some japa or maybe visit the temple or kind of fix a few days of going to the temple or fix a few days of doing japa for so long, and then they come back because the falling energy is suddenly brought to a focus. तो जरूरी नहीं है कि आपका एक तरह का मेडिटेटिव पैटर्न परसिस्ट करेगा. अगर आप 108 क्रियास कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप यही कर पाएंगे सारा टाइम. कभी कभी इससे ज्यादा भी कर पाएंगे लॉन्गर मेडिटेशन में और कभी कभी वो ड्रॉप भी करेगा.
लेकिन ये बात के लिए योगी को अलर्ट रहना है कि ओके, नाउ माय क्रियाज आई एम नॉट एबल टू डू एज मेनी, सो लेट मी एटलीस्ट रिप्लेस इट बाय समथिंग एल्स व्हिच आई एम एबल टू डू राइट नाउ। क्योंकि लाइफ चैलेंजेस कई बार ऐसे होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता मॉर्निंग इवनिंग 108 क्रियाज करने का, तो इस गिल्टी नहीं फील करना है, लेकिन अपने टाइम को जाहिर भी नहीं करना है। Suppose someone in the family is in the hospital and you have to visit the hospital morning evening and you don't even have time to sit for meditation, but जब आप ड्राइव कर रहे हैं या आप कैब में जा रहे हैं उस टाइम पे आप अपने आप को इंटीरियराइज कीजिए, आप तब प्रत्याहार प्रैक्टिस करो, तब आप मास्टर की म्यूजिक सुनो या स्वामी जी का म्यूजिक सुनो, तब आप इंटरनल जपा करो, तब आप बैठ के होंगसो कर सकते हो। तो ये बहाना नहीं चलता है कि अगर मेडिटेशन प्रॉपर करने का टाइम नहीं मिला तो भी और टूल्स हैं। The important thing is to keep practicing the presence of God all the time in one way or the other. You have to keep holding on. अगर सिर्फ मेडिटेशन के बारे में सोचोगे तो 24 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे आप कर पा रहे हो, बाकी 22 घंटे आप वेस्ट कर दोगे जीवन के, तो फिर पहुंचेंगे कैसे गोल तक हम? फिर मिसिंग द पॉइंट हो जाएगा। तो आपने 24 घंटों को यूटिलाइज करना है। 24 घंटों में से हर सांस, हाउ शैल आई लव दी लॉर्ड माय गॉड विद एवरी ब्रेथ आई ब्रीथ। तो मेडिटेशन तो एक हिस्सा है, बाकी living actively for God, remembering him all the time, doing all actions in his name, remembering that he is the doer, and always in all situations applying the wisdom of who am I really. जब भी उलझने लगो अपने आप को याद करो, I am not this body, I am the Atman. तो हर समय निरंतर यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो 24 घंटे में से 24 घंटे will be filled with God. Then how can there be a separation between you and God or between you and your own Atman? So ये हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। It's like a muscle. Spirituality is like a muscle that has to be trained. अगर किसी ने 10 किलोमीटर मैराथन रन करनी है तो उसको दिन रात उसी के बारे में सोचना है, उसने अपना खाना उस हिसाब से खाना है, उसने अपनी वर्किंग आवर्स उस हिसाब से रखनी है, उसने पूरा वर्कआउट करना है, उसने अपने आप का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो अपनी पूरी लाइफ उसके आसपास ऑर्गेनाइज करता है कि मुझे ये मैराथन में रन करना और मुझे इसको जीतना भी है। तो हमारे लिए क्या है गोल? हमारे लिए गोल है गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमारा भी जो सारा जीवन है, उठते बैठते सोते जागते हर चीज में, मास्टर हैज सेड, से गॉड गॉड गॉड, लेट इट बी अ वॉर क्राई, द साइलेंट वॉर क्राई इनसाइड यू। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, भगवान को याद तो करना ही है। अगर if you don't want to miss the point, if you don't want to backslide, if you don't want to go back into the worldly ways of which are painful and in vain, then we must practice the presence of God all the time. Do what you can to the best of your ability, and God will not leave us alone. Whoever makes the effort, God is there to lift us up. हम कोशिश तो करें, हम अपना तो पूरी जान प्राण लगाएं कम से कम। Okay. So Swamiji says, when you feel tempted to go back to former ways of living, reflect mentally on all the reasons that brought you to the spiritual path to begin with. The world will be no better if you go back to its ways now. Rather, you will constantly regret what you have abandoned. That is the peace of meditation. And you have also abandoned the joy of seeking the only truth there is, the fellowship of uplifting friends and worthy ideals. So ऐसा तो स्टोरीज स्वामी जी ने कई बताई हैं हमें, मैंने ध्याना जी से कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं जिसमें कुछ लोग आनंदा आए and they got uplifted but only to an extent, and then they thought that some other path is for them, or they thought enough of this spiritual practice, and they went back to their worldly ways. Just within a year, all that glow that comes to your eyes, the smile that comes to your face, a relaxed aura that you develop with meditation, all that goes away within a year. It's very easy to backslide. It's very very difficult to go back again. एक तरह से ना जैसे स्लाइड वाली गेम होती है जो हम खूब खेलते थे, चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्लाइड उतरने में अच्छा लगता है लेकिन एक सेकंड में उतरा जाता है, पर फिर वापस चढ़ना हो तो फिर से मेहनत करनी पड़ती है. So we must remember this. If we feel that our energy is going low, if our devotion is diminishing, तो क्या करेंगे? आनंदमयी माँ ने क्या कहा था? She said you should weep tears of love for God. And if you yourself are unable to weep those tears, be in the company of souls who weep tears for God. So being in a good company, in an uplifting company, in the company of truth seekers is the best way, easiest way to avoid backsliding. और मास्टर कहते थे कभी भी वर्ल्डली लाइफ में ज्यादा जाओ तो अपने साथ एक स्पिरिचुअल बॉडीगार्ड ले जाओ. तो इफ यू हैव अ फ्रेंड हु इज स्पिरिचुअल, यू आर गोइंग आउटसाइड टू द मार्केट और टू सम प्लेस,
it's best to take them along. नहीं तो internal companion, keep God and Guru as your internal companion. As you're walking on the road, do your internal japa. Don't allow your senses to just scatter into the world. तो बाहर का डेटा आता जाएगा तो आपके अंदर रेस्टलेसनेस होगी. आप अपने आप को फोकस्ड रखोगे तो ना आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपका काम भी एफिशिएंटली होगा, और जब आप घर आओगे आप एग्जॉशन में भी नहीं जाओगे. So we must all be aware of backsliding. Do not, Swamiji in the end of this sutra, he says, do not give in to these obstacles. In spite of your efforts, however, you may find one or more obstacles confronting you, and your spiritual progress appears to have stopped. You feel stranded. ऐसा time आता है, you feel lost. आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. So in that time, it's like a test. Swamiji says, persevere. That means अपनी प्रैक्टिसेस जितनी कर सकते हैं वो करते रहिए, जितना आप अपनी कोशिश डाल सकते हैं. और ऐसे टाइम में जरूर आप, ये हमें एहसास हो जाता है, उसी टाइम पे ऑफर अ प्रेयर. गुरुजी, आई एम नॉट एबल टू फील योर प्रेजेंस एज मच, आई एम नॉट एबल टू फील सो मच डिवोशन राइट नाउ, माय प्रैक्टिसेस आर गोइंग डाउन, आई डोंट वांट टू गो बैक, आई वांट टू कम टू यू, यू हैव टू प्लीज होल्ड मी, होल्ड माय हैंड टाइट, एम्ब्रेस मी, ब्रिंग मी टू यू. तो जब भी ऐसा फेज आने लगे, होल्ड ऑन टू द गुरु. द गुरु नोज ऑलरेडी कि ये फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आपका हाथ और टाइटली पकड़ेंगे और वो आपको पार लेके जाएंगे. लेकिन अपने आप को सरेंडर करना, और फिर भी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से एफर्ट डालना, ये बहुत जरूरी है. All progress proceeds by rise and fall in this world of duality, but as Yogananda ji said, a saint is a sinner who never gives up. So if we don't give up, then all of us are moving towards sainthood, we are moving towards eternal freedom, we are moving towards the eternal bliss of the Lord, which is our very own, which we are actually, but we're just on the way to realize it. And the help of all these scriptural studies, we are going to realize it. Okay, we come to Sutra 31, and this basically 31 follows 30. 30 mein he has listed all the obstacles, and 31 में पतंजलि is listing कि वो obstacles जब life में आते हैं तो हमें कैसा feel होता है, what do they bring along with them. So the sutra says, दुख दौर्मन्यस्य अंग में जयत्व श्वास प्रवास विक्षेप सहभाव. मीनिंग, दुख तो हो गया ग्रीफ, पेन, सफरिंग. दौर मानस्य मीन्स मेंटल एजिटेशन. अंग में जयत्व मीन्स ट्रेमर ऑफ द बॉडी और ट्रेमर ऑफ द लिम्स. श्वास प्रश्वास मीन्स इरेगुलर ब्रीदिंग. विक्षेप इज डिस्ट्रैक्शन, एंड सहभुव मीन्स simultaneous experience. So इसको अब हम simply कहें तो grief, mental distress, tremor of the body and irregular breathing accompany the non-focus or non-concentration upon God. And Swamiji simplifies it further. He says, accompanying the obstacles are moodiness, despair, nervous agitation and agitated breathing. So ये अब हमको अपने आप में चेक करना है कि हमारा माइंड कब एजिटेटेड हो रहा है, हमारी ब्रीदिंग एजिटेटेड हो रही है कि नहीं, क्या हम मूडी फील कर रहे हैं या नहीं, या हम डेस्परेट यानी डिस्पेयर में, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं कि नहीं. और लाइफ में, हर डेली लाइफ में ये सब चीजें होती हैं हमारे साथ, कितनी डिग्री की हो रही हैं, क्या हम पहले से बेटर हो रहे हैं इसमें कि नहीं. और ये सब हमें मान लेना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स जो आए हैं एक योगी की लाइफ में उसका रिजल्ट है. अब उसके बारे में करना क्या है ये स्वामी जी हमें आगे एक्सप्लेन करते हैं. सो ही first talks of moodiness. Moodiness is a low energy state. It is a kind of a temptation, and it is a fruit of sense indulgence in the past. So ये हमें बहुत याद रखना है कि हम मूडी यदि फील कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने पास्ट में कुछ सेंसुअल एक्सपीरियंसेस में हमने ज्यादा इंडल्ज किया है, एंड उससे इवेंचुअली डिस्गस्ट और मूडीनेस दोनों आते हैं. जब आप सेंसुअलिटी की तरफ जाते हो तो एक कभी ना कभी तो डेड एंड आता ही है, तो वहां डिस्गस्ट प्रोड्यूस होती है और उसके एज अ साइड इफेक्ट आप बाद में मूडी हो जाते हो. इट कैन नॉट बी रीजन्ड अवे. सो आप इंटेलेक्चुअली ये जो मूडीनेस है इसको नहीं हटा सकते हो. इट हैज अ सर्टेन मैग्नेटिज्म ऑफ इट्स ओन, कॉजिंग पीपल who possess it to enjoy it. जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा
और आप फिर उसमें से कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है उस मूड से निकलने के लिए, तो आप निकलना ही नहीं चाहते हो, आप काइंड ऑफ उस एनर्जी स्ट्रेटा में बहुत अपने आप को कंफर्टेड फील कर रहे हो, सेल्फ पिटी में आप कंफर्टेड फील कर रहे हो, इसीलिए कोई निकालना भी चाहे तो आप निकलते नहीं हो, और अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग से तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकते हो। एंड इवन इफ दे आर अनहैप्पी इन इट, in their heart of hearts they want to come out of it, but वो accept नहीं करते हैं औरों की suggestions ऐसे में। Okay, so moodiness depends on the level at which one's energy is centered in the spine. This does not always mean कि lower chakra में है energy तो वो सिर्फ moodiness की तरह ही आएगी, because वो lustful भी हो सकती है, वो angry energy हो सकती है, वो stubbornness की energy हो सकती है, so ये सब हो सकता है। But all of such feelings, Swamiji says, are kind of, parallel to moodiness. वो कहीं ना कहीं moodiness के बहन भाई हैं और आपस में ये सब linked हैं. So the simple solution for this, for a yogi knows that his energy, he can play with his energy, he can actually work with his energy, and therefore he must consciously uplift the energy in the spine from the lower chakras to the upper chakras. For people in this moody state, you will find that you're not able to meditate very easily, but chanting करना उतना मुश्किल नहीं होता। क्यों? chanting कैसे? chanting is half the battle. आप it's typically 2.5 feet की जो हमारी spine है, lower chakras में आपकी energy trapped है। यदि आप heart की energy awaken करोगे तो यहाँ का magnetism जब बढ़ेगा, ये lower chakras की energy को pull up करेगा heart पे, तो आप आधा रास्ता आ चुके हो। This is half the battle. अब यहाँ से आपने spiritual eye जाना है, which is easier. Therefore, when you're not able to meditate, then you must sing to the Lord, you must pray to the Lord, you must do your japa, do all the other things. छोड़ना नहीं है बस, खाली नहीं बैठना है बस। खाली तब बैठ सकते हैं जब आप निर्विकल्प समाधि में हो, जब आपको और जो कार्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उससे पहले हम बेसिकली अलर्ट रहना है कि हमारे क्या हम मूडी फील कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी एनर्जी लोअर चक्रास में है, और इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपनी एनर्जी को अपर चक्रास में लाएं, चाहे हम वो ब्रीदिंग टेक्निक से करें, चाहे हम चैंटिंग से करें, चाहे हम अपनी क्रिया से करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर एबल टू डू इन दैट मोमेंट। ओके, concentrate deeply at the point between the eyebrows. Even a few minutes of this practice will be sufficient to drive your darkest mood away. So again, this is what Swamiji is saying, focus here. और इसीलिए मास्टर भी कहते थे, live through your spiritual eye. You must always live through your spiritual eye. Now, this is, I have found, I've tried this practice sometimes, and it has, even beyond meditation, it is possible. So not always possible, but it is possible many times when we thought earlier that it is not possible. So we can live through the spiritual eye gently. जब कोई नहीं है आसपास, gently keep your gaze gently uplifted, not abnormally, but just be centered here. And sometimes even in a crowd, what you can do is you can visualize that you are being centered at the medulla. Through your brain you're looking into your spiritual eye. उसमें जो eye position है वो बहुत ज़्यादा change नहीं होती है, but your inner perception does change. So these are things that we can try. We have so many tools and techniques, and these help us to bring up our energy and bring us out of moodiness. Then we talk of despair. We'll finish this sutra today, and yes, 2-3 more things that Swamiji says. So about despair, Swamiji says, it is usually due to some outer misfortune. A person may suddenly lose his job, his fortune, or probably everything that person considered meaningful for him. So ऐसा misfortune अगर life में हो जाए, तो कई लोग ऐसा suicidal भी हो जाते हैं। और suicide के against सभी शास्त्र जो हैं वो बहुत ही strongly बोलते हैं। कहते हैं कि अगर आपने बॉडी को मार दिया, फर्स्टली तो आपने बॉडी को मारा जो कि आपने बनाई नहीं थी, तो वो बैड कर्मा भी आपने क्रिएट किया। प्लस जिस ऑब्स्टिकल से बचने के लिए आपने अपनी बॉडी को खत्म किया, वो ऑब्स्टिकल तो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलने ही वाला है। बल्कि इट इज सेड दैट पीपल हु कमिट सुसाइड नीड टू गो टू हेलिश एस्ट्रल जोन्स and suffer a lot before they can actually come to the state they were in. So पहले इतना डिसेंड करके वापस आना, और उसके बाद you have to actually pay a price for this life. This life has been given to us. हम इसको ऐसे नहीं खत्म कर सकते हैं। जब तक इस जो पूरी सोल की जर्नी है वो फिनिश नहीं हो जाती, बीच में से भाग नहीं सकते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट सोचते हैं सुसाइड को, उसके लिए जो सभी स्क्रिप्चर्स हैं वो strongly recommend against करते हैं, and we should be very careful with that. Now
is just, I don't know why this thought is coming, but if any of you has any person who is in depression and around you in your families or extended families or your friends, it is very important. सब लोगों को कई बार लगता है, lightly लेते हैं डिप्रेशन को, लोगों को लगता है ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा जगह चेंज करने से ठीक हो जाएगा, but many a times depression is biochemical, means the chemicals in the body are such that the person is unable to help himself and he may turn suicidal anytime. It's best, as a first treatment, it's best to give him certain medication so that his energy is changed at least to some extent, जहां वो relate कर सके थोड़ा बहुत normal life को. तो medicine हमेशा avoid करना is not always a good idea. कभी मेडिकेशन देके एक एटलीस्ट रिलेटेबल लेवल को तक पेशेंट को लाना होता है, वहां से फिर आप और अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और चीजें कर सकते हो. सो वन शुड नॉट जस्ट नेगेट एवरीथिंग कि मेंटल हीलिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है, सब लेवल्स पे एप्लीकेबल भी नहीं होती है कई बारी. So we should be very practical and commonsensical in our approach. Even people who are living in anxiety, let us not say clinical depression तो बहुत ज्यादा हो गया. कई लोगों की लाइफ में एंजाइटी होती है, उसको भी टेम्परेरीली till the time they are gaining the experience in yoga, in pranayam, in chanting, in good company, till that time थोड़ा सा टाइम ब्रिज करने के लिए some light medication with the consultation of a doctor should be taken and can be taken. And then once you cross that difficult part, then you can help them with various other things. Okay, so the way out of despair is to know that everyone is divine light, is the divine flame of God. He has that light within him. Know that one can never be completely destroyed. कि हम मर नहीं सकते कभी भी, हम खत्म नहीं होंगे, शरीर खत्म होगा, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी probably. और स्वामी जी कहते हैं कि even those, even who had very bad karma, suppose कोई ऐसा था जो नाजी जनरल था और उसने हजारों लोगों को उस टाइम पे मारा, तो चाहे वो जो भी हो, चाहे द वर्स्ट ऑफ सिनर हो, इवेंचुअली ये रियलाइजेशन कि वो एक आत्मन है और वो अनडिस्ट्रक्टेबल है और वो एक डिवाइन फ्लेम है, यही उसको सैल्वेज कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है. तो इसलिए कंप्लीटली डिस्पेयर में हमें नहीं जाना चाहिए. ये कहना आसान है, बट फिर भी वी कैन हेल्प अदर्स आल्सो. इफ वी फील अदर्स आर गोइंग इनटू डिस्पेयर, वी कैन हेल्प देम विद द मेनी टूल्स दैट वी हैव. एंड द स्पार्क ऑफ डिविनिटी, यहाँ पर इसको हम सटल कर दें हमारी डेली लाइफ में, कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो यदि हम उस पर गिल्टी फील करते रहेंगे, सो वो दैट डिमिनिशेस आवर स्पार्क. तो ठीक है, गलती हो गई, उसको एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और जिसको भी सपोज एक पर्सन को सॉरी कहना है उसको कहिए, भगवान को सॉरी कहना है सॉरी कहिए, उसको अमेंड कीजिए और आगे बढ़िए. उस पर स्टक मत हो जाइए, बिकॉज उससे भी डिस्पेयर आता है हमारे अंदर कि हम तो इतने बुरे हैं, मैंने तो सोचा था कि मैंने ये प्रॉब्लम्स से मैं बाहर, इस हैबिट पैटर्न से बाहर आ गया हूँ, लेकिन मैं तो अभी आया नहीं, ओहो आई एम नॉट सच अ गुड पर्सन. प्लीज डोंट गो इनटू दैट थॉट प्रोसेस. इट्स यूजलेस टू थिंक लाइक दैट. So acknowledge, accept, amend, and move forward. Okay. And यहाँ पे स्वामी जी ने reincarnation के बारे में लिखा. As Indians, it is ingrained in all of us that we know that reincarnation is the definite possibility, is the way things go. But उन्होंने for all universal audience, he has mentioned that it is important that we must be aware that reincarnation is a universal reality. But he says even without that, anything that is corrective to us, even in this life, suppose we only say that people believe in YOLO. What is YOLO? You only live once. आजकल के youngsters का ये वो short form है. You only live once. Even if you live only once, you have to live anyway. Why not live the right way? Because only the right way will give you the happiness that you are seeking. Then he talks of nervous agitation. This nervous agitation, this will actually bring tension in the muscles. तो जो लोग भी कहते हैं कि मेरी ये मसल में स्पैज़म आ गया, मेरी नेक में स्पैज़म आ गया, it's actually a result of some mental tension. अगर आप वजन नहीं उठा रहे हैं दिन भर में, अगर आप फिजिकल लेबरर नहीं हैं, पर फिर भी आपकी मसल्स टेंस हो रही हैं, इट्स एक्चुअली योर ओन मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी व्हिच इज मेकिंग द मसल्स ऑफ द बॉडी टेंस. सो यू नीड टू रिलैक्स. Energization is one way of physical relaxation. Pranayam is another way of mental relaxation. ये चीजें प्रैक्टिस करने से फायदा होता है. और ऑफ कोर्स जो योगासन जानते हैं, हठ योग जानते हैं, उसको भी प्रैक्टिस स्ट्रेचेस करने से बहुत फायदा होता है.
मसल क्रैम्पिंग, बॉडीली पेन, ये सब जो साइंस हैं ये नर्वस एजिटेशन के हैं। और गुरुजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि यदि आपके बैंक में पैसा नहीं है और आप चेक काटते जा रहे हो तो वो बाउंस होंगे ही। सिमिलरली अगर आपके बॉडी और माइंड में रिलैक्सेशन और पीस नहीं है, लेकिन आप और रेस्टलेस कामों में अपने आप को उलझाते जा रहे हो, तो आपका तो बिल्कुल ही डिप्लीशन से भी, बैंकरप्सी में ही जा रहे हो आप। तो फिर आप कैसे इस पीस को एंजॉय करोगे? नहीं, तो आपको मिलेगा ही नहीं। सो फर्स्ट पॉज, इंट्रोस्पेक्ट कि आप जो कर रहे हो वो नेसेसरी है कि नहीं, अपने आप को ओवर इन्वॉल्व तो नहीं कर रहे आप वर्ल्डली टास्क में, उससे थोड़ा विड्रॉ करो और फिर वो चीजें करो जो आपको रिलैक्सेशन देती हैं। और वो सब करने से ये नर्वस एजिटेशन जो है वो कम हो जाएगा। Okay. Now, finally, he talks about agitated breathing, which is also the result of one of these obstacles. Again, agitated breathing is also a sign of mental distress. We know our mind and breath are very, very closely related. Restless mind means restless breath. Relaxed mind is relaxed breath. And the yogis hold it in a reverse manner. They consciously relax the breath and they are able to consciously control the mind. And we have all been given the technique of Hong Sau, which does this wonderfully. So do not underestimate, जो क्रियाबांस हैं वो कई बार होंग सौ भूल जाते हैं, लेकिन होंग सौ की जो पावर है उसको कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए. There are times when you cannot do kriya, but you can do hong sau all the time. So please bring yourself back to that centering with the technique of hong sau. Fear, anxiety, and agitated hope are the main causes of the breath becoming agitated. And finally, Swamiji says, be calm within. No matter what happens to you, allow nothing to affect your peace of mind. So with that, let us share the peace that these teachings bring to us with the entire world, with all sentient and insentient beings. Divine Mother, thou art omnipresent. Thou art in all thy children. Manifest thy healing presence, thy divine peace in all bodies, all minds, and all souls. Oh. 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 Divine Mother, may thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken thy love in all hearts. Om Shanti, Shanti, Shanti.